I'm very sorry for the disruption created by everybody, by myself even, because the video was stopped because my phone died. So, as we can see here, the gx, if we turn it as gx, if this the fx turned into a gx, if this function is named as gx, the derivative of the function gx would turn out to be negative, as it is negative, the slope is negative. So, which turns out the dx, the derivative of the derivative, is also negative, which implies d2y, d2x, dx2 is less than 0. And here is a very important, I don't know why I have that so many places. Anyway, I will. So yeah, I will speak in a bigger voice because I think that my voice is not audible. So here, the first derivative will depend on the slope of the tangent. Yeah, we know that. The second derivative will depend upon the curvature of the graph of the, or the curvature. This is a very important topic. Yeah. So this is here for the topic of the maxima and minima. We'll also discuss the radius of curvature and its sign convention, and then we have the ROC of parabola, the ROC of ellipse, the circle with changing radius, and we will start integration, and then we will start area substitution, and then we will know a lot about a sine and cos graph, how we can comment on it also. So this is going to be a long run. So I will erase this. Oh my god. This is such a new way to study. It's fun. It's very fun. But मेरे को इंग्लिश में बोलने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई कैसा बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा अंग्रेज बन रहा हूँ. Like I'm doctor. Like bro, shut up. Anyway, we're talking about the ROC, the radius of curvature. Radius of curvature. So I will take a curve. I can comment on this graph just by looking at it, that what would be the derivative? What would be the double derivative of this function? If I just put circle here, I would know that the double derivative of the function is is positive. Here it is. So how would we know that? So this is the graph. This is not the graph. This is the curve that I've taken. So I will just let you know what is the logic behind this. I will take a circle there. It is a very bullshit circle anyway. Yeah. So this is the RC, the radius of curvature. So this is the small part where you can see this is the small part. So this is the small piece that we are talking about, the DL. This is the small length that we are talking about. This is the small length, which is this. This is the small length. This could either be
on a straight line, you could see this can turn into a straight line, or this could be a circle. It could be beneath the curve or above the curve, which depends. So for a flat curve, we also take a radius of curvature, which will turn out to be like this, which is a straight line. This is a flat curve, straight line. Yeah. So the RC, the radius of curvature, would be for a straight curve would be infinite, which cannot be counted. But you can see the small part, this dl length, which is this, could turn it to be a circle or not. So now we will discuss the sign convention of this. Here it is. Where is the white? The sign convention. Not able to write it, but I might need to take another chalk. Yeah. If circle is line, oh my god, this is pathetic. Lord. If the circle is lying above the curve, circle is lying above the curve, the radius of curvature would be positive. Here. And the double derivative of the function would also be positive. Here is an example. See. And if circle is lying below the curve, radius of curvature would be negative. Would also be negative. Here, this is a solid example. This is the sign convention. These are the sign convention of the radius of curvature. And now we will move further to the formula of sign convention. Sorry, the formula of the radius of curvature. I think I should write this here. So for a function, y is equals to fx. But people write it like this, right? I write it this side like this way better. So the RC would be 1, my bad, wrong bracket. I think I need to make my notes better way, like the way that I write it, but it's okay, I'm not teaching it for the students anyways. For a function, fx, oh my god. You could also write this way, it doesn't matter. The formula of the radius of curvature would be 1 plus d2y, I guess, sorry, dy by dx square by the double derivative d2y dx2 by power 3 by 2, right? Yeah, this is the formula of radius of curvature. This is 3 by 2. So now we will bracket, close this in the back. Yeah, this is the very dirty, this is the worst type of diagram that anybody in the human history have ever created. But yeah, I'm not a fucking teacher, dude. Anyway.
The same would be for the RC, right? So there is a point in a curve of radius of curvature, this point that I'm talking about, this is known as the point of inflection, where the double derivative of the function turns out to be 0. Or you could say the turning point, we could say that, right? Because this could be a very good life example. Because if we have to stop something in our lives, like if there is a habit or something else that we have to stop, that will only stop when we will stop doing that X activity for the Z one, right? Point of inflection. So yeah, what I was talking about, if you have to stop doing something, if you have to take a turn in a relationship or in any sorts of thing, you have to stop at first. Like for me, it was when I wanted to study, and I had to stop doing the activity which was stopping me to study. Right? I was on my phone. I was on my phone, wasting my time. I was wondering why I wasn't studying. I needed a point of inflection in my life. This is a very good. I think physics increases your vocabulary if you understand it. So I was trying to find the point of inflection, and point of inflection is not fine. You have to stop doing that. Then you will find the point of inflection. So in an RC curve, radius of curvature curve, where a point where the double derivative turns out to be 0, or the turning point would be known as the point of inflection. Anyways, now we will move to the parabola. The RC of parabola. Parabola, this is the graph of parabola. I don't know why I did it so fast. Parabola. I will just write it kx square. Anyways, whoever the fuck don't understand, I don't give a fuck about anybody. I give a fuck about myself. This is the graph of parabola. And you can see this is up, right? The double derivative would be positive. This is the R. Yeah. Two kh derivative, double derivative. Double derivative at 0 would be nothing because it is not dependent on x. It is already 2k. So now the formula of RC. I will not write the formula of RC. 2kx square 2k. This is the parabola. You are wrong, my friend, because we need to remember the condition of maxima, local maxima, local minimas, all that thing. We need to remember what we call that. There is a reason why we did dy by dx 0. So the value of dy dx at origin at 0 would be placed there. So this would be 0. So RC would turn out to be okay. That's all. This was for the parabola. This would be 1 by 2k, 1 by 2k, 1 by 2k.
1 by 2k, 1 by 2k. Now we will find it for sin x, okay. Well, sin x and 0, 0, pi by 2, 0. Okay, we have a lot of things. Sinusoidal curve. Okay, this is gonna be heavy. I will stop speaking. It's gonna be heavy. Heavy, very heavy.
my head. Lord, my head. Ah, my head. Differentiating. Differentiating it twice. We'll also remember that we will also create into this, into this. That is why I've written this. What the fuck? The fuck?
अरे भगवान, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या है यार, ये मेरे को अलजेब्रा इसीलिए नहीं पसंद है यार। अरे यार। हाँ, चलो यार, कलम चलाना पड़ेगा। कलम चलाने से और कुछ फायदा नहीं, ऑल्टरनेटिव। आई हैव टू जस्ट थिंक। एक काम करता हूँ ना। क्या है इसमें? कैसे आया माइनस बी बाई ए? माइनस बी स्क्वायर बाई ए। आ, क्या है ये? पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? अरे यार, सेल्फी नहीं। नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा। ऐसी हिम्मत आता हूँ भाई। सर ने तो आदत खराब कर दी है मेरी। क्या क्या सब लिखवा देते हैं। भालोगी मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एलिप्स को ऐसे डिराइव कर रहा था ये वाला भाई। इसके बाद यार मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया यार। ये लास्ट वाला जो स्टेप लिखा, टू बाई ए स्क्वायर प्लस टू बाई बी स्क्वायर, इसके बाद नहीं दिमाग काम कर रहा। इसके बाद खत्म। बस यहीं पे उसके बाद नहीं समझ में। कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन ही इसके आगे नहीं समझ में आ रहा है। किसी के पास आइडिया है तो मेरे को बता दे। इसका आंसर माइनस बी स्क्वायर बाई ए है।
पागल हो रहा हूँ यार मैं, और कुछ नहीं। नहीं हो पाएगा, इसको कट कट करो, गलत गलत है ये। याद कर लेंगे बस इसको। इस पे घुसा रहूंगा तो समय बर्बाद है मेरा। I have to call somebody right now. क्या हो गई? कुछ नहीं देख रहा। ये क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। उस पर लिख करके कहा है ऐसे ही। उससे और इसमें क्या अंतर है पता नहीं। पता नहीं। पंखा मत बंद करो। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ। किसको भेजना है? खुद के लिए। खुद पे रिकॉर्डिंग समझ नहीं आया हमको। उससे मिटा रहे हो? हाँ एक खराब कर दी, वैसे भी कोई नहीं पहनता था इसको, बहुत लंबा हो गया, तुम भी नहीं पहनता था। अच्छा उससे और इसमें क्या अंतर है? कॉपी में करने और इसमें अंतर है? इसमें अंतर में बस ऐसे ही, मतलब बैठे बैठे बहुत वो हो जाता था एकदम, बैठे बैठे पीठ पीठ में मोनोटोनस लगने लगता था। इसमें डायरेक्ट एक ही में पूरा सॉल्यूशन एक बार में कर देते हैं। नहीं आ रहा इसमें में, नहीं होगा मुझसे यार। नहीं होने वाला है, बैठाना पड़ेगा पूरा। ये भी गंदा करोगे, नीचे रखो ना वहां पे। नीचे बेड पे मत रखो ना, नीचे रखो उसको। पूरा आईपैड टाइपैड सब खराब करोगे तुम। पता नहीं इसमें क्या पढ़ाई तुम्हारा होगा एक्स्ट्रा। फोर फोर this is it 4 by 4 1 sinus I will curve x 2 by
L से आएगा 2 pi, तो अगर x is equals to 2 pi, r L is equals to 2 pi, तो अगर 2 pi है तो x is equals to L हो गया, which is also equals to 2 pi. Y is equals to, इसका equation है alpha sin beta x. ये कैसे आया मुझे समझ आ कोई. Alpha is equal to a naught, beta is equal to 2 pi by, कहाँ से है ये? समझाना पड़ेगा मुझको. Alpha is equal to a naught. Alpha what? Alpha ये इक्वेशन है इसका, बस और कुछ नहीं. Y is equal to a naught sin 2 pi r upon L. I'm going to know about that because Y is equals to like alpha is equals to a naught, beta is equals to 2 pi by L. X है a naught, bx है beta x का. Function a naught sin, sorry, yes, sin 2 pi by x by L. This is the function. The first derivative of this function will be dy by dx is equals to a naught, and sine is not constant. A naught 2 by L are constant here. A naught upon a naught 2 into 2 pi by L are constants here. The things would be in derivative would be sine 2 pi by 2 pi x. So first would be differentiate sine cos 2 pi by r, sorry 2 pi x, sorry only x. This would only remain x because we have taken common this side. This will remain x, and this is answer. This is the first derivative. Now we have to take out another derivative. First derivative इसको इक्वल टू करना करना पड़ेगा 0 origin. So now we have to take out the second derivative. d2y by dx square is equals to a naught 2 pi L minus sin x. Minus sin x. This is the second derivative now. RC 0 पे है. x 0. हाँ 0 पे तो सिर्फ ये आएगा. हाँ यही है ना. डबल डेरिवेटिव
Oh, only A naught is in there. Yes. So as you can see, friends, we have done very negative, very bad here. This whole everything about this is wrong. That is why I told you this is not for learning. This is strictly not for learning. This is me learning about my idiosyncrasies. अरे यार ये मेरा ही बिजनेस है. हाँ, दोबारा करना पड़ेगा. कोई नहीं, दोबारा करेंगे. गलती से सीखता है आदमी. गलती से सीखता है. एक बार देखिए, दोबारा करेंगे. dy by dx is equals to only a naught is there, right? So this would be cos 2 pi x by l, right? Yes, into 2 pi l, because x को इसको डेरिवेट करेंगे तो बस वो आएगा. Okay, so now अच्छा जी, तो अपने पास अब डबल डिफरेंशिएट करने के लिए भाई अपने पास बहुत है, क्योंकि अपना सिंगल डेरिवेटिव तो ये आंसर आ गया, लेकिन नाउ वी हैव टू डबल डेरिवेटिव वुड बी अ पेन इन एन एस बिकॉज इट इज क्रेजी. डबल डेरिवेटिव इज क्रेजी. भाई इसको मैं कैसे करूँ? इसको अंदर रखो, यस, इसको हटाओ. टू पाई एक्स इंटू चलो भाई लोग, अब डिफरेंशिएट करने के लिए अपने पास ये दोनों टर्म आ गए. डिफरेंशिएट पहला कहाँ है? मैं आंसर में सोल्यूशन देके थोड़ा और दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन अब दोबारा करा जाएगा मेहनत से, क्योंकि अपने पास मेहनत के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. ए नॉट इधर ही अपना साइड, इसको मैं साइड में ही फेंक देता हूँ. इधर मैं ऐसा ब्रैकेट बना देता हूँ, बड़ा वाला. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें cos 2 by x by l का डिफरेंशिएशन 0. यस, यही होना चाहिए. यही होना चाहिए यार, यही होना चाहिए. ये करेंगे और फिर ए नॉट को थोड़ी ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर. पहले इसको लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, फिर प्लस करके अपन लोग इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे. माइनस साइन 2 पाई बाई एक्स अपॉन एल माइनस साइन एक्स. ये अपना आया. हाँ, इंटू यही होगा भाई. अगर नहीं हो तो मैं सर बोलूंगा. यही है, मैं जानता हूँ यही है, मैं जानता हूँ यही, इसके अलावा हो ही नहीं सकता है कुछ. हाँ यही है, ये राइट. इधर लिख देते ए नॉट माइनस माइनस साइन 2 पाई एक्स बाई एल इंटू 2 पाई बाई एल. दिस इज second derivative, I guess. Nothing else, और कुछ भी नहीं आ सकता है. I don't know, this is like square कैसे आ रहा है? Square कैसे आ रहा है?
रहा, ये भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। There's nothing to stop here. मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ यार, कोई नहीं कर रहा, किसी को बुला भी नहीं पा रहा हूँ, टीचर भी नहीं है। ग्रुप में भी किसी का दम नहीं है इसको करने का। दम वाले लौंडे नहीं है यार। एक मेरा दोस्त है वो कर सकता है, पता नहीं कर सकता कि नहीं कर सकता। गाइस मैं अपने कोचिंग का टॉपर को कॉल कर रहा हूँ, जिस लास्ट कोचिंग में मैं जाता था श्री शक्ल में। कॉल तो नहीं उठाया, मैं कर देता हूँ। भाई मैं सबको कॉल घुमा रहा हूँ यार, रिशु तो एक हफ्ता से देखा नहीं है, सब मेरे दोस्त है कोचिंग वाले, उन सबको यार कॉल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं टीचर को भी नहीं कर सकता हूँ, कोई रात के 11 बजे हैं। अरे यार यार दो चीज में फेल हो गया यार, साइनोसाइडल ग्राफ का भी नहीं मैं कर पाया, डेरिवेशन और आरओसी और फिलिप्स का भी नहीं कर पाया। मैथ बहुत डेंजर है। पीयूष को करता हूँ, पीयूष हाँ, पीयूष ही है ना, ये अपना पीयूष है ना। एक बार दोस्त आया पीयूष वाले कोचिंग का, सर दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। नींद जा रहा है, पता नहीं उठाएगा कि नहीं उठाएगा, सर फट रहा है, नहीं हो रहा यार। हेलो, आवाज नहीं आ रहा भाई पीयूष। हेलो,
Hello, hello. गाइस मैं मदद मांग रहा हूँ एक दोस्त से. ओ भाई साहब ये फिजिकली बहुत दिमाग खराब करती है. देखो ये है रियलिटी यार, मैं कैसे बता दूँ लोगों को. दिस इज द रियलिटी. स्टूडेंट्स लाइक मी. गाइस मैं यहीं पे बंद करता हूँ ये वीडियो. I don't give a fuck about this video. I need to solve